Hello everyone, I welcome you all to this new lecture of English grammar for competitive exams. In today's lecture, we are going to talk about word formation. So what do we mean by word formation? It is a process by which new words are produced. ये एक process है जिससे हम new words बनाते हैं. It can be either by complete innovation, कोई word innovatively invent हो सकता है, और modification of existing words, या फिर जो already existing words हैं हम उनको modify करके new terms create कर सकते हैं. So basically word formation का मतलब है new words बनाना either by complete innovation or by using the existing words. तो word formation के different processes होते हैं. There are 10 processes of word formation which we are going to learn in today's lecture. First is coinage, borrowing, compounding, blending, clipping, back formation, conversion, derivation, abbreviation and acronym. आज के लेक्चर में हम ये सारे प्रोसेसेस समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस किस तरह से न्यू वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं. So the first one is coinage. When new names are invented with the invention of new things. जब किसी नई चीज का इन्वेंशन होता है तो उसके लिए एक न्यू टर्म कॉइन की जाती है. फॉर एग्जाम्पल फोन. जब फोन्स का इजाद हुआ, फोन्स का इन्वेंशन हुआ, तो उनके लिए इस न्यू टर्म का यूज किया गया. इंस्टाग्राम. जब सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म बना तो उसके लिए पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम टर्म का यूज किया गया. टेलीविजन, फेसबुक, सो ऑन एंड सो फोर्थ. जब कोई नई चीज का इन्वेंशन होता है उसके लिए एक नया नाम इजाद किया जाता है. अ न्यू टर्म इज कॉइन्ड व्हिच इज कॉल्ड एज कॉइनेज. The second is borrowing. When we take over words from one language to another. अगर हम एक भाषा का वर्ड दूसरी भाषा में यूज करते हैं बोरो करके तो उसे हम बोरोइंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द टर्म्स डॉक्टर एंड मोबाइल हैव बीन बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज. हम इंग्लिश से डॉक्टर और मोबाइल वर्ड का इस्तेमाल हिंदी में भी करते हैं. तो डॉक्टर एंड मोबाइल, these words have been borrowed from English language and are commonly used in Hindi as well. The third process is compounding. When we create new words by joining two existing terms. जब already existing words को join करके हम new words point करते हैं उसे हम compounding कहते हैं. For example, we use the word post plus man to form a new term postman. We combine the terms break plus fast to form the new term breakfast. तो हमने already existing terms का use करके new terms को point किया है. The next is blending. When we join the first part of a word with the second part of another. जब हम पूरे word का इस्तेमाल ना करके किसी एक word का एक part और दूसरे word का दूसरा part join करके new term बनाते हैं उसे हम blending process कहते हैं. Let's understand with the help of an example. We have the word breakfast and lunch. We combine both these words. We take the first part of this word and form brunch. We take the first part of breakfast and the second part of lunch to form this new term that is called brunch. Another example is television. We use the first part of television and the second part of broadcast to form this new term which is called as telecast. तो इसमें हम पूरे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करके उस वर्ड के एक पार्ट को दूसरे वर्ड के एक पार्ट से जॉइन करते हैं. We only take parts of the word to form a new word. The next process is clipping. When we reduce a multi-syllabic word to a one-syllabic word, it is called as clipping. What do we mean by multi-syllabic and one-syllabic word? Let us understand with the help of an example कि multi-syllabic और one syllable word में क्या difference है. For example, there is a word internet. When there are more than one vowels in a word,
that is called as multisyllabic. For example, we have E twice in this term, therefore it is called a multisyllabic word. यहाँ पर 2 बार वॉवल साउंड का यूज किया गया है, इसीलिए ये मल्टीसिलेबिक कहलाता है. एंड नाउ वी रिड्यूस दिस टर्म, हम उस टर्म को छोटा करके एक सिंगल सिलेबिक टर्म बना देते हैं, दैट इज नेट. वी कॉमनली यूज दिस टर्म नेट. इंटरनेट के लिए हम नेट टर्म का यूज करते हैं. यहाँ पर एक वॉवल साउंड है तो ये है वन सिलेबल वर्ड, और यहाँ पर 2 वॉवल साउंड्स हैं तो ये है मल्टीसिलेबिक वर्ड. द सेकंड एग्जांपल इज रोबोट. देयर आर 2 syllables, so it is a multisyllabic word and we reduce this word, इसको compress करके हम बोलते हैं boat. Both these words mean the same, but this is a compressed version of the first word. Next is back formation. To reduce a word to form a word of another grammatical category. There are different grammatical categories. अगर एक word की grammatical category चेंज करके हम उसे दूसरे वर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे बैक फॉर्मेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेलीविजन इज अ नाउन एंड वी कन्वर्ट इट टू टेलीवाइज व्हिच इज अ वर्ब. सो द कन्वर्शन ऑफ अ नाउन टू अ वर्ब इज कॉल्ड एज बैक फॉर्मेशन, बिकॉज इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी नाउन से चेंज होकर वर्ब में चेंज हो गई, तो हम इसे बैक फॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं. इस तरह से हम एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, वर्ब, नाउन, डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज को इंटरचेंज कर सकते हैं. एक वर्ड को एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में हम कन्वर्ट करते हैं यूजिंग बैक फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज कन्वर्जन. व्हेन द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ अ वर्ड इज चेंज्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड. हम जब ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज करके पूरी तरह से एक न्यू वर्ड बनाते हैं, जो पहले प्रोसेस हमने पढ़ा उसमें हम सिर्फ रिड्यूस करते हैं टर्म को, बट यहाँ पर हम उस वर्ड को रिड्यूस नहीं करते, हम उसकी कैटेगरी चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चेयर इज अ नाउन एंड चेयर इज अ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आई चेयर्ड द सेशन. वाटर इज अ नाउन एंड वाटर इज अ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आई वाटर्ड द प्लांट्स. तो इसमें हम वर्ड को रिड्यूस नहीं कर रहे, बट हम वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज करते हुए उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ताकि नाउन को वर्ब में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, अलग अलग कैटेगरीज में कन्वर्ट कर सके. नेक्स्ट इज डेरिवेशन. टू डिराइव अ वर्ड ऑफ अनदर ग्रामेटिकल कैटेगरी बाय एडिंग डेरिवेशनल मॉर्फीम्स. जब हम मॉर्फीम्स ऐड करके एक नई कैटेगरी इजाद करें, उसे हम डेरिवेशन कहते हैं. ये बहुत ही कॉमन टेक्निक है जो आप सब ने हमेशा यूज की होगी, सुनी होगी, बट शायद हम इसे इस टर्म से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो मैं उसे आपके लिए सिंप्लीफाई कर देती हूँ. आपने अफिक्सेस सुना होगा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अफिक्सेस. वी हैव प्रीफिक्स एंड वी हैव सफिक्स. प्रीफिक्स वो होता है जो किसी वर्ड के पहले ऐड किया जाता है, और सफिक्स वो है जो किसी वर्ड के एंड में ऐड किया जाता है और उससे न्यू वर्ड्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, केयरफुल. जब मैं केयर वर्ड के आगे फुल ऐड कर दूंगी, दिस इज अ सफिक्स. व्हेन दिस सफिक्स इज एडेड टू दिस वर्ड, इट बिकम्स केयरफुल. दिस इज अ न्यू टर्म. पॉसिबल के आगे जब मैं इन ऐड कर दूंगी, दिस इज अ प्रीफिक्स, and this results into a new term that is impossible. So prefix और suffix यानी कि affixes add करके हम new words बना सकते हैं. Next is abbreviation. It is again a very commonly used process. We take initial letters of group of words to form an abbreviation. हम initial letter से एक short form बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं abbreviation. For example, ये common words आपने सुने होंगे. For Central Processing Unit, we use the abbreviation CPU. For Compressed Natural Gas, we use the abbreviation CNG. But जब हम इन्हें pronounce करते हैं abbreviations को, तो कभी भी combined pronunciation नहीं होता. They are pronounced individually like CPU and CNG. Next is acronym. It is very similar to abbreviation, but
थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में. Again, it is a process of creating words by taking the initial letters from a group of words. ये भी एक short form बनाने का एक तरीका है. For example, the Indira Gandhi National Open University is termed as IGNOU. अब abbreviation और acronym में क्या difference है? In case of acronyms, as I suggested, हम कभी इसे wholesome pronunciation नहीं दे सकते. We call it individually like CPU and CNG. But in case of acronyms, हम इसे complete word की तरह pronounce करते हैं. For example, IGNOU is pronounced as IGNOU. So that is the difference between abbreviation and acronym. Thank you all for listening. In today's video, we have discussed different processes of word formation, and in the next lecture, we are going to continue with some examples and word conversions. Thank you.